कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र नंबर 5 we were discussing. What was the mantra? अविद्यायाम् अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायाम् अंतरे वर्तमान। अविद्यायाम अंतरे मीन्स अविद्या की बीच में, अंदर में, इनसाइड द इग्नोरेंस वर्तमान, what is present over there means something else which is surrounded by, covered by the darkness of ignorance and desired object, kamya vastu. They are surrounded by kamya vastu, surrounded by avidya. अविद्या की परिचय कैसे होगा ना? ऐसे व्यक्ति विचार प्रवण होगा। कैसे विचार? He or she will be verily judgmental and quick judgmental about the, not about sat and asat. Never think that this person will be that viveki. That person will constantly judge about the person, about the place. And it is written in Shankar Bhashya. If you want, I can read the Sanskrit. That person will constantly judge the person. Shankaracharya is writing that person may read Shastra whole the time, write the Shastra whole the time, but his mind is always judging people. He is too much attached with his or her own thing and very aloof about the others. In their words, they are very holy person and knowledgeable person, but inside there are a lot of darkness. Avidyayam antare vartamana. Swayam dhiraha pandityam manyamana. They think they are very buddhiman, intellect, and reading, studying some books, they think they know a lot. Dandryamyamana mudhaha pariyanti. Bhagavan not only. In Veda it is telling they are very crooked mind. They never can't see anything else straight away. In their mind, a lot of things comes.
Why? What happened? About this time, what happened? On that time, what happened? They're always, and digging with the past, and comparing with the present. Dandriyamyamana means kutil svabhav, crooked nature. They are actually mudhaha. They are judgmental, but Shruti is saying they are actually aviveki. They don't know what to do, what not to do. Clear? And they try to teach others. People listen or not, that's a different thing. But they try to teach others. And if it happens, it's like andhena eva niyamana yathan. As if a blind is leading another blind or so many blinds. So कोई व्यक्ति है जो खुद को शास्त्रज्ञ मानते हैं, किसी के पास से थोड़ा बहुत सुना है, खुद भी कुछ पढ़ा है, according to their knowledge, they try to make others understand. But in their personal life, they are absolutely opposite of the knowledge. Firstly, they have understood the Shastra in a very halfway. So, in that way, we got Karma Kanda and so many rituals at our own families. Because if there is one Saraswati Puja, if there is one Durga Puja, if there is one marriage, they are all Shastriya. But we will find that हर घर की अलग अलग नियम है, because they are driven by their पुरोहित, और घर में ऐसा कोई था जिनको सब लोग पंडित मानते थे. Please switch on the video. I want to see. So the thing is, now they think Javat Jivam Agnihotram Juhuyat. जितना दिन आप जियोगे, you should do Agnihotra Yagna. आप इस जगत की भोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्निहोत्र करने से ही सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं. And they justify their everything else with a very flowery language. According to Gita, it is Pushpita Vacha. Pushpitam Vacham. Second chapter, 42 sloka, Bhagavad Gita. लोग ऐसे ही बोलते हैं अक्सर, कितना दिन बचोगे, देखा ना, 30 साल की बच्चा मर गया, 20 साल की बच्चा मर गया.
अरे मृत्यु कभी भी आ सकता है। कब भोगोगे? भोग तो करो, भगवान इतना भोग की सामान दिया है, सामग्री दिया है। कब भोग करोगे? जगत में ऐसे पंडित की अभाव नहीं है। और वो आपकी ये अद्वैत वेदांत की बात ऐसे 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 करके काट देंगे अपने जीव से। इसीलिए श्रुति माता ऐसे लोगों के साथ तर्क करने के लिए माना कर रहे। भगवान श्री राम कृष्ण अपने भक्त और शिष्य, जो लोग एकदम यंग युवक था, उनको बोल रहा है मुझे टच कर और प्रतिज्ञा कर, और तर्क नहीं करेगा किसी के साथ। मतलब बेफालतू लोगों के साथ हम लोग तर्क करने लग जाते हैं। हम सब लोग खुद को ऐसे ही समझ लेते हैं कि हम लोग आचार्य है। अच्छा, और मैं जो कर रहा हूं उनको भी ऐसे ही करवाना पड़ेगा। व्हाट आई एम डूइंग, ईच एंड एवरी वन शुड डू दैट। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स अनदर फैनेटिसिज्म। First, you know the thing properly, understand the thing, practice the thing, get established in that thing. थोड़ा बहुत हम लोग सुनते हैं और उसका प्रचार में लग जाता है। और लोग जिनको सुनाते हैं वो लोग उन अपने अपने सब्जेक्ट में एकदम पंडित है। और इसमें क्या होता है, आई बिकम कन्विंस्ड विद देम। मेरा शास्त्र वासना चला जाता है। दैट्स द मेन थिंग। सो वेदांत की दृष्टि से ये सब लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को कर्ता और भोक्ता मानते हैं वही ऐसे कर सकते हैं। द पर्सन हु थिंक्स ही इज द बॉडी, ही इज द डूअर, ही इज द एंजॉयर, this body is the doer, this body is the enjoyer. They are really in the darkness of ignorance. Because our subject matter is Atma, who is a non-doer, akarta, non-enjoyer, abhokta. In Atma, there is no doership, there is no enjoyership. Because the sense of doership and enjoyership is ajna. And that Agnan tree has many branches. In worldly activities and in Vedic rituals also. इसीलिए प्रवृत्ति परायण सारे मनुष्य, चाहे वो शास्त्रज्ञ हो चाहे वो अशास्त्रज्ञ हो, सब अंधकार में डूबे हुए हैं और खुद खुद को ज्ञानी समझते हैं। इसके लिए the thing they think that they are very knowledgeable,
इसका फल क्या हो रहा है ना? अविवेकी लोग इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं। समटाइम्स they can't find out the actual road, they fall into the ditch. Likewise, the people who think they are very pandita और अपने जीवन में, पूजा में, साधना में, जीवन की हर स्टेप में, सांसारिक, सामाजिक, दे आर कंट्रोललेस। खुद दुख मिलता है, दूसरे को दुख देता है। ऐसे नहीं कि चाकू से, शब्द से। उपनिषद इज टेलिंग, भगवान शंकराचार्य जी इज टेलिंग। ऐसे व्यक्ति कभी प्रेमिक नहीं हो सकता है। उनका प्रेम करने का व्यक्ति भी गिने चुने हैं, 1 2 3 4 5। और हाँ, वो तो प्राइमरी गेट की है। सेकेंडरी में 1 2 3 4। नो, आई कांट लव। व्हाट अबाउट, सी इट्स गुड टू रीड, बट आई कांट डू दैट इन माई लाइफ। Everything I appreciate in book, I can write at least 100 pages on that subject, that we should love everyone else. How much love is required in our life, how we should be generous. But in my life, no, 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 no. It's not possible. I am exempted. But people should do it, and they can quote from here and there, they can write pages after pages on that. They can tell. That is called, that is also andhenaiva niyamana yatahanda. We will see what Gurudev has written regarding this. You know, the comparison used here is so impressive that this has become a proverbial mantra, and it is often used in criticizing the smaller panditas who take the duties of guiding the society or the community in their assumed privileges as men of knowledge. So, any amount of book knowledge cannot make one a real Vidyan unless one has come to live in a spirit of renunciation and live actually a life dedicated to self-purification and self-knowledge. So mere book knowledge cannot make one really wise. And a wise one need not necessarily be a great student of books, and yet can be living a life of pity and self-control. Some people who, you know, live amongst the academicians, and if their husband, son, daughter, or other people are very, they are having degrees, they start demonizing other people who don't have that much of education. They start judging people according to their academic. I know those persons, believe me. They have no value of humanity, no value of love, respect. If they judge people
अरे उन्होंने एम्स में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, उसमें पढ़ा है। अरे वो तो हुआ क्या? दे कंसिडर अ पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जिन्होंने कोई गांव की कोई स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन दिल में इतना श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, they don't consider them as human being also. And ugly words they use for them. Ugly words. Believe me, I have seen those persons, not only in past, even now in present also. So the thing is, this is the tragedy, you know. That is the tragedy. When the mere bookworms come to glorify the seat of Rajaguru, the society or the country led by such panditas, make a direct beeline towards national ruins and international confusion. Neither mere birth nor parentage can make one a pandita. When such panditas lead, Lord Death says, the leader and the led would ultimately reach a similar tragic situation, at once sad and comic. Just as when a blind man is led by another equally blind man. It's our Gurudev is telling. Then it is told, so deluded in many crooked ways. As a consequence of the individual's cultivated imperfections and spiritual ignorance, he develops desires in his mind for the satisfaction of which he does karma, good, bad, and indifferent, and thus earns wealth of reactions to be suffered or enjoyed in unending future births as a consequence of their indifference to their own real nature. They develop an acute sense of ego and the consequent pain riddled varieties of I-ness and minds. न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे न संपरायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्वमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे. It's another significant mantra. Lord Death continues his thinking, means thinking out aloud, and roars this truth
which has been an inspiration even for Sri Bhagavan Vyasa. I will discuss it about. So, what is the meaning of that mantra? The way to the hereafter is not apparent to the ignorant man who is childish, befooled by the glamour of wealth. This is the only world. He thinks there is no other. Thus he falls again and again under my sway. मतलब क्या हुआ? Samparaya. We will see the mantra in the prose order. So first come the word Samparaya. Samparaya pramadyantam vittamohena मूढ़म बालम प्रति न भाति अयम अस्ति परः न इति मानि पुनः पुनः मे वशम आपद्यते। जी यमराज शिक्षा दे रहे हैं। सांपराय, सांपराय मतलब परलोक, लेकिन सांपराय मीन्स पारलौकिक साधना। ओके, सांपराय मीन्स परलोक, सांपराय पारलौकिक साधना, प्रमाद्यंतम। So the person who is deluded out of वित्त धन, जिनके परिवार में अचानक धन आ गया, हाँ, because of the husband or relative or son or daughter, and for that that person is really deluded, क्योंकि इधर दिया है प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन, धन की मोह में, those who are really deluded, मूढ़म means they are deluded, मूर्ख out of ignorance, आवृत्त चित्तम, balam, they many times they bluff, they talk as like childish, और उनको उसमें गर्व होता है। देखिए ना, मैं तो बच्चा जैसे बात कर लेता हूं, उम्र हो गया मेनी डिकेड्स, लेकिन एटीट्यूड इज लाइक, माने इस बुर्वाकी काम शब्द में देयर इज नो कंट्रोल, ऐसे जैसे बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है, उनका भी शब्द में कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ भी माइंड में बोलते हैं, देखो मेरा शब्द जो भी बोला है मेरा मन में ऐसा नहीं है, लेकिन दे फॉरगेट words are nothing but the expression of the thought and mind. Means they are, you know,
ignoring the science behind it. वर्ड्स कभी ऐसे नहीं आ सकता है. What's the last stage? Words is the are the result of your thought process, your mind. You can't deny कि नहीं 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 विश्वास कीजिए, मैं जो बोला वो मैं सोचा नहीं. माई माइंड इज एब्सोल्युटली, मैं तो बच्चा जैसे बोल देता हूँ. श्रुति इज टेलिंग सेम वर्ड. मूढ़ न मूढ़म बालम, और उनके सामने प्रति न भाति. असली सत्य कभी प्रकाशित नहीं होता. मैंने एक व्यक्ति से मिला था. उन्होंने अमेरिका के ऊपर शायद एक दो किताब लिखे थे. एंड मैं नाम बोलने से ही आप लोग पकड़ लेंगे. आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड इट वाज अ रियली अ रिसर्च प्रोडक्ट, यू नो. इतनी रिसर्च उन्होंने. I asked him, how many times you went to US? He told not a single time. I told, how is it possible? I read so many books, so many things I have read. I have met so many persons, but मेरी जाना नहीं हुआ, जाने का सुविधा नहीं हुआ, कुछ भी. Here also, a lot of people can write, read, speak on truth, लेकिन सत्य उनके सामने प्रकाशित नहीं हुआ. They don't know the taste of the truth. It is something different. क्योंकि जिनके सामने सत्य प्रतिभात हो जाता है ना, उनका एटीट्यूड, शब्द, उनका सब कुछ बिल्कुल बदल जाते हैं. बिल्कुल. ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग महात्मा बोलते हैं. हमारे अंदर से आ जाता है ये शब्द, कोशिश नहीं करना पड़ता. सो प्रति बालम प्रति न भाति. अयम लोकः अस्ति. दिस पृथ्वी इज देयर बिकॉज वी कैन सी इट, टच इट, हियर इट, smell it. So the thing is, what we can't see, what we can't perceive, that is not. This is the conclusion. अयम लोकः अस्ति. ये पृथ्वी है क्योंकि मैं इसे देख सकता हूं, सुन सकता हूं, सूंघ सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, टेस्ट ले सकता हूं. परह न इति, जो मैं नहीं देख पाता हूं वो मैं विश्वास नहीं करूंगा. श्रद्धा की अभाव. ऐसे व्यक्ति चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकते हैं, चाहे शास्त्र पढ़ सकते हैं, चाहे घंटों तक पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन पुनः पुनः वार वार में मतलब मेरा वशम, मेरा वश में मतलब मृत्यु के वश में आपद्यते आ जाते हैं. मतलब वार वार जन्म लेता है और जन्म मृत्यु का जो दुख है वो भोग करते हैं. क्लियर.
Next explanation we will do tomorrow. Hari Om.